Okay, dear students, welcome to all of you. Today we are going to discuss about the flow sensors. As we know that flow is the important sensor in the industries. There can be several methods and applications of the flow. In the pipeline, suppose we are transmitting the flow at a distance, like in the petrochemical industries from the some Gulf countries, we are taking the pipeline and we it is needed to measure the flow rate at in between. So generally, if we take the flow is proportional to the measurement of the pressure. If we make the measurement of pressure at two distant places, suppose here we want to measure the pressure at the 2 point and we put a obstacle that can be the different type of in the form of sensor. ये हमारी orifice plate हो सकती है, वेंचुरी ट्यूब मीटर हो सकते हैं, फ्लो नोजल्स हो सकते हैं. So these are the different type of the flow sensors that are the based on the differential pressure type transducer. So suppose we measure by taping, we measure the flow at this point, which is the point A and it is the point B. It is the obstacle that is the orifice plate. Suppose the pressure is P1 here and here the pressure is P2. Now the difference between the two pressures P1 and P2 will be under root delta, that will be F. So we can say F is equal to under root delta P. तो डेल्टा पी जो प्रेशर डिफरेंस है उसका जो अंडर रूट है उसका प्रोपोर्शनल फ्लो के इक्विवेलेंट होता है. दैट हैपन इन केस ऑफ द डिफरेंशियल टाइप प्रेशर ट्रांसड्यूसर. It can be asked you in the different type of the competitive examination that if the differential pressure is 4 times, अगर हम इसको 4 गुना कर दें, and what will be the effect on the flow rate. So definitely if the differential pressure will be 4 times, इसको अगर हम 4 गुना कर देंगे then जो हमारा flow होगा that will be the 2 times, flow rate हमारी 2 गुना हो जाएगी. तो orifice plate, वेंचुरी ट्यूब, फ्लो नोजल डिफरेंशियल प्रेशर टाइप के ट्रांसड्यूसर्स होते हैं और यहाँ पर हम इनको फ्लो मेजरमेंट के काम में लेते हैं. इसके अलावा एक हमारा फ्लो का जो सेंसर होता है दैट इज ओनली इंडिकेटिंग टाइप फ्लोमीटर, जिसमें कि दैट इज कॉल्ड द रोटामीटर. रोटामीटर इज ऑल्सो द वन टाइप ऑफ फ्लो मेजरमेंट डिवाइस दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लो रेट, जो कि केवल फ्लो रेट को इंडिकेट करने के काम में आता है. और दैट इज ऑल्सो यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज. द टर्म इज द रोटामीटर. तो हियर इज द इस तरह की हमारे पास एक कॉनिकल शेप की पाइपलाइन होती है और यहाँ पर हमारा इसके बीच में इन बिटवीन देयर विल बी ए स्केल. यहाँ पर एक स्केल माउंटेड होता है. अब अगर यहाँ पर एक जो हमारा फ्लोट है दैट इज मूविंग, यहाँ पर हमने एक फ्लोट ले लिया दैट मूव अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट. जो हम फ्लो रेट देते हैं यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दिस फ्लोट विल बी मूव upward direction, and where the float will stuck then that will be proportional to, that is measured with the scale that is proportional to the, due to buoyancy force that float will move upward and that is proportional to the flow rate. But that instrument is only used for the purpose of indication purpose. No, so these there can be, we have seen the differential pressure transducers, rotameter. These are the flow transducers, and one flow transducers here we are studying the some alag different type of flow transducers that are the ultrasonic flow meters, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर एंड थर्मल मास फ्लोमीटर. ये 3 तरह के फ्लो ट्रांसड्यूसर्स और होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं.
जिनका आपसे अगर फ्लो ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पूछा जाए तो आप इनमें से किसी भी, या तो नाम देकर आपसे पूछा जाएगा अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थर्मल मास फ्लोमीटर के बारे में, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज आप जनरल इनमें से किसी के भी बारे में लिख सकते हैं, और अगर बड़ा क्वेश्चन है तो तीनों के बारे में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर सीइंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर। तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर्स हैं, इनमें व्हेन ए कंडक्टर इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is developed due to magnetic induction, or voltage induced across the conductor while moving right angle to the magnetic field is proportional to the velocity of the conductor. As shown in the figure, here we are showing the setup of the such type of electromagnetic flow meter. There are two magnets, one this, and it is the magnetic field between the two magnets, and a flow is flowing between these two magnetic fields bit perpendicular to this flow. Then this flow will be proportional to the formula we can use. The EMF voltage will be generated. If we are using the two conductor, then voltage will be generated inside this pipeline. Suppose flow is flowing and we are using the two conductors to take the output. ये हमारे पास इस तरह की पाइपलाइन होती है। यहाँ पर हमने दो कंडक्टर ले लिए और इनके एक्रॉस इफ वी मेजर द वोल्टेज, यहाँ पर हम वोल्टेज को मेजर करते हैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो दैट वोल्टेज विल बी प्रोपोर्शनल टू द VLB। Here B is the magnetic flux density cost that depends on the type of magnets जो हमने यूज लिए हुए हैं। These are the fixed, it is the fixed, B is the fixed value, L is the length of the conductor, जो L है वो हमारे कंडक्टर की लेंथ को बता रहा है, तो that is the also fixed conductor length, and V is the velocity of the fluid, तो दैट विल बी ई जो वोल्टेज डेवलप होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल होगा। इन दिस वे वी कैन से द इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर, a full flow electromagnetic flowmeter consisting of a magnetic coil that encircle the pipe containing a flowing fluid, तो जो वोल्टेज जो जनरेट होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द फ्लो रेट। तो एप्लीकेशंस हैं जो इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर होता है, ये हमारा कहाँ पर यूज होता है, दैट इज यूज्ड इन द like the such type of flowmeter are used for measuring the flow velocity of liquid metal such as mercury, sodium, potassium, and find application nuclear reactors. They can also be used for liquid of poor conductors if they contain adequate amount of charged particles. Flow rate measurement of corrosive liquids, slurries, and fertilizers are also possible by electromagnetic flow meter. Now, second is the ultrasonic flow meter. Ultrasonic flowmeters are second sound wave in the ultrasonic range, about 1 megahertz range में होती है। So its operation mainly depend on the ultrasound waves being reflected and discontinuous in the density. As shown in these two diagrams, it can be in the two setup. First is called the transit time flow meter, and second is called the frequency shift flow meter. So there can be two type of ultrasonic sensors. As shown in the figure, here we are using the transmitter and it is the receiver on the same side, and it is the flow rate flowing here when we transmit the ultrasonic wave and it is received by the receiver. Then the time taken by this receiver is measured and a reflected mode configuration, that will be minimum, जो हमारा टाइम आएगा वो मिनिमम होगा। द ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर, it involves the two transducers located at certain distance at alternatively transmit and receiving ultrasonic sound wave. The travel time
for each direction can be measured accurately and the difference can be estimated. कितना समय जो लगता है ट्रेवलिंग में, that will depend on the flow rate. So according to that travel time, the receiver get the reflected wave will be directly proportional to the flow rate. In the frequency shift flow meter, it is normally known as a Doppler effect ultrasonic flow meter that measure average velocity along the sonic path. As shown in the figure, it is the second arrangement. Here we are using the transmitting element and it is the receiving element, and it is the reflector. So here the transmitter and receiving element are at the same place. दोनों चीज़ हम एक ही जगह पर रखते हैं. Piezoelectric transducer placed outside the surface of the flow transmit sound wave through the flowing fluid that reflects from the inner wall of the surface. जो कि surface की inner wall है, उससे reflect होकर ये wave वापस आती हैं inner wave से. And by capturing the reflected signal, the change in frequency is measured which is proportional to the flow velocity. तो इसकी frequency में कितना change हुआ, that depend on the flow rate or that is detected by the this receiver element. So that is the two principles on which we can measure the flow by the transit time flow meter and frequency shift flow meter. And third जो है that is the important thermal mass flow meter. Direct measurement of mass flow of gases can be accomplished through thermal energy transfer. As shown in this diagram, here we are measuring the flow with the help of the थर्मल मास फ्लो मीटर. जैसा कि यहाँ पर दिखाया हुआ है हमने, दो आरटीडी के मटेरियल प्लेटिनम के वन ईयर, that is T1, another is T2 is taken, and it is the flow rate. The one is kept at higher temperature. Suppose T1 have the 20 degree centigrade higher temperature than T2, then gas will flow from higher to lower temperature, and that is measured with the, that is proportional to the temperature change. कि इनका टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है, T1 minus T2. According to that difference, gas will flow. So according to the, by measuring the temperature difference of the both the element T1 and T2, अगर हम इस टेम्परेचर को मेजर कर लें, क्योंकि जो हीटर है उससे पहले जो गैस है और हीटर के बाद की गैस है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हायर टेम्परेचर की गैस है, ये मूव करेगी, और अकॉर्डिंग टू द फ्लो रेट, कि कितनी फ्लो रेट है हमारी उस गैस की, according to that there will be temperature variation on T1 and T2. So by measuring the that temperature difference, that will be proportional to the flow rate. In this way we can measure, by these three methods we can measure the flow. And इसके अलावा जो हमने अभी स्टडी किया था, इस तरह का हमारा जो डिफरेंशियल प्रेशर टाइप के फ्लो मेजरमेंट सेंसर थे, उससे भी हम फ्लो को मेजर कर सकते हैं. So there can be different type of in this manner flow measuring devices. इस तरह से हमारे different type के flow measuring devices हो सकते हैं. तो you should read it, और I think कि it is important temp flow transducers. Thank you very much.